Now children, let us solve page number 62 of your maths book. But this page 62 we will solve in you all will solve in your classwork notebook. Okay, now it's time to make your classwork notebook colorful and beautiful. That means first of all you all will draw these items, you all will draw these things in your classwork notebook, just like here I have drawn. At the top you will write down cost of some objects is given, and you will draw like this. This is a toy truck and cost is rupees 12. This is bread, cost is rupees 5. Jam, and this guitar, cap, bag, chair, pencil box, soap. Okay, so same you all will draw these things in your classwork notebook, and then we will solve all questions one by one. So here I will solve 3 questions, and rest 2 questions children you will do same as I am solving, as I am going to solve 3 questions. तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप सभी अपनी क्लासवर्क नोटबुक में ही उसी तरह से सॉल्व करेंगे. So this is also a shopping. When you go for shopping and we buy few things, few items from the shop, then we add the cost of those items and then we pay the shopkeeper according to that. So it's just like a shopping. The first question is, here we have to find out money spent and money, sorry, not this. Here we have to find out the money spent and money left for each. Okay, that means कितना पैसा आपने खर्च किया शॉपिंग में और कितने पैसे आपके पास बच गए. To find out spent, to find out money spent, we always add. Whereas to find out money left, as we know now, left is a key word for subtraction children. Okay, this we have already learned while solving the addition and subtraction chapter. So money spent, to find out the money spent we need to add, and to find out the money left we need to subtract. So let us solve the first question. Kitty and her mother went shopping. They had rupees 100. That means Kitty and her mother had rupees 100 with them, and they bought a toy truck and a school bag. Now here you have to find out, we have to find out money spent and money left. So for this, how do you solve? For this, first you will write on the question as I have written, then answer. 3 statement, always you will write on the 3 statement first. That is, first statement will be money with Kitty. So what money, how much money Kitty had? We can see Kitty and her mother went for shopping and they had rupees 100 with them. उनके पास कितना रुपया है? 100 रुपीज़. जब वो शॉपिंग करने गए थे तो उन्होंने 100 रुपीज़ अपने पास रखा. So here we will have the money with Kitty is equal to rupees 100. Then we will find they bought toy truck and a school bag. So we will find out the cost of toy truck and a school bag from these list. So toy truck, here is the toy truck and the cost of the toy truck is rupees 12. So here we will write down rupees 12, and the cost of the school bag we can see is rupees 88. So here cost of the school bag you will write down 88. Okay, so these 3 statements you will write down in all word problem given on this page number 62. Now here, after writing these 3 statements, you will find out money spent and money left. As I have already told you that
टू फाइंड आउट द स्पेंट अमाउंट वी विल ऐड. उन्होंने टॉय ट्रक खरीदा एंड स्कूल बैग खरीदा, तो टोटल खर्चा जो होगा, टोटल जो उनका खर्चा है, दैट इज मनी स्पेंड. और वो हम कैसे पता करेंगे? बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ दीज टू गुड्स. ओके, दैट मीन्स हियर वी हैव टू ऐड ₹12. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन 12 एंड पैसे में क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं, ओनली 12 रुपीज़, नो पैसे. सो बिलो P वी कैन राइट डाउन 00. अगेन द कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग इज़ ₹88. तो 88 कहाँ है? रुपीज़ में है, तो हम रुपीज़ वाले कॉलम में 88 लिखेंगे. एंड अगेन वी हैव नो पैसे ओवर हियर, सो वी विल राइट डाउन द 00 एंड देन वी विल ऐड देम. 0 + 0 will make 0, 0 + 0 0 यानी 0 पैसे. And 8 + 2 10, 10 का 0 and this one will be carry over here. And then 8 + 1 9, 9 + 1 again 10. So the total money spent is ₹100. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Money spent is equal to ₹100. Okay children, now that means Kitty and her mother spent total ₹100 to buy toy truck and school bag. Now here we are going to find out money left. To find out the left we need to subtract. और क्या subtract करना है? जितने पैसे उनके पास थे उससे जितने पैसे उन्होंने खर्च किए. यू जस्ट सपोज कि आपके पास 20 रुपीज़ है, यू हैव 20 रुपीज़ विथ यू एंड यू गो टू द शॉप एंड परचेज अ पेन ऑफ 10 रुपीज़. आपने 20 से सिर्फ 10 रुपीज़ का एक पेन खरीदा, तो कितने पैसे आपके पास बच जाएंगे? डेफिनेटली लेफ्ट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? 20 था, 10 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 10. दैट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग the spent amount from the amount that you have. यानी यहाँ भी हम to find out the left money we will subtract this spent amount, this money spent from this money that that they are having, that they had. तो here that means we have to subtract this from this. तो हमको पता है कि 100 में से 100 घटाएंगे तो obviously we will get 0 like this. 100 रुपीज़, यहाँ पैसे में 0 0 है, तो here we will get 0 0 0. that means no money will left with them. तो आप लिखोगे यहाँ money left is equal to 0 0. Okay, let us solve one more question children. Second one is Renu had ₹76. रेनू के पास कितना है? 76 रुपीज़. And she bought a cap and a soap. So first you will write down the three statement. Money Renu had is 76 rupees. And the cost of the cap का cost क्या है? That also we can find out from this list. 15. The cost of cap is ₹15. So here we will write down 15. The cost of the soap is ₹9. So here we will write down ₹9. Now we have to find out the spent money. The spent money निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसने cap और soap खरीदा. So we will add the cost of cap and soap here. So first we will write down here rupees and here paise. How much rupees if we have? 15. और पैसे कितने हैं? 0 0 and here 9 again 0 0. Then we will add 0 + 0 0, 0 + 0 0, 9 + 5 14, carry 1, 1 + 1 2, 24 rupees and 0 0 पैसे. That means money spent क्या हो गया? Here we will write down money spent is equal to ₹24. And here we have to find out the left money. Left money के लिए हम क्या करेंगे? We will subtract this spent money always.
this spent money. To find out the left money, we will subtract this left money from this money that Renu had initially. That means rupees, again paise, and here we will write down 76 rupees 00 paise, because this was the amount that Renu had. ये पैसा रेनू के पास शुरू में था. फिर उसने कैप खरीदा, सोप खरीदा, तो इसने कितना टोटल खर्च कर दिया? 24 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया. तो अब उसके पास कितने पैसे बचे? तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस स्पेंट अमाउंट फ्रॉम दिस टोटल मनी दैट रेनू हैड. तो यहाँ भी 24 रुपीज़ और पैसे क्या है? 00. देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट. 0 0 0 6 minus 4 2 and 7 minus 2 5. So 25 rupees. This is the left money. तो अब आप यहाँ लिखोगे LEFT, left money is equal to rupees 52. Okay children, so same here also. So same like you can solve all the question. Archana had rupees 36. She bought a bread and jam. तो सबसे पहले आप 3 स्टेटमेंट लिखोगे. अर्चना के पास कितने व्हाट मनी अर्चना हैड इनिशियली, दैट इज रुपीज़ 36. शी बॉट अ ब्रेड एंड जैम. द कॉस्ट ऑफ ब्रेड एंड जैम it's rupees 5 and cost of jam is rupees 27. So we will write on rupees 5, rupees 27. To find out the spent money, first we will add the cost of bread and jam here. So here 5, पैसे में 0 0, जैम का कितना है 27. तो 27 हम इधर से लिखेंगे, ऑलवेज मेंशन. ओके 0 0. 27 का 7 क्या है? वंस प्लेस पे, और 5 का 5 वंस प्लेस पे. तो वंस मैच होना चाहिए ऑलवेज. देन वी ऐड 0 0, 7 प्लस 5 12 एंड 3. सो टोटल स्पेंट मनी हो गया 32. एंड लेफ्ट मनी एज यूजल वी विल सब्ट्रैक्ट द स्पेंट मनी फ्रॉम द टोटल मनी दैट अर्चना हैड इनिशियली. सो अर्चना के पास 36 रुपीज़ थे, 00 पैसा. टोटल खर्च कर दिए उसने 32 रुपीज़ 00 पैसे. देन वी विल सब्ट्रैक्ट देम. सो हियर पुट द साइन ऑफ एडिशन, हियर पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन ऑल. ओके 0 0 0 पैसे. 6 minus 2 4, 3 minus 3 0. That means Archana have 4 rupees left with her. Archana has 4 rupees left with her. Okay, the same way children you will solve rest 2 question of page number 62.